stream URL TG private and start streaming. It's going good. Instagram. Create live video. October 24, 2025. SuperAreas.com. Audience. Public. Copy. Paste. Install. Okay, that's coming now. And one more thing. Let's start publishing. Channel more. Live stream. Yes. Start with copy. Go live here. Studio. RTMP coffee. TG public. Sorry guys, a lot of starting rituals every day. Copy the stream. Live stream. Start streaming. Studio content. Live. Well, Sam, good morning, sir. Kya chale, guys? Everything is okay, even. Voice देखिएगा जरा. Voice. आप जाएं टेक प्रॉफिट की वेबसाइट पे और वाइस पे दोनों. Okay. तो FTM वाले हाँ कोई बात नहीं, वो आ जाएगा क्योंकि अभी उसने मैं अभी 300 से हूँ तो वो लंबा बैठे. हाँ 300 के इर्द गिर्द हमने लिया हुआ है, कोई बात नहीं. ठीक है, अब आप जाएं टेक प्रॉफिट की वेबसाइट पे. वाइस आज खुल गया. हाँ तो दोनों चीजें आज रात सुबह उठा हूँ ना, एक तो मुझे उन्होंने सारे चारों अकाउंट वापस किए और साथ मैंने सारे टैक्स के डॉक्यूमेंट अपलोड किए वाइस पे. मैं कहा भाई मैं कोई सारे टैक्सेस पे कर रहा हूँ, ये मैंने $1.5 मिलियन रिपोर्ट किया लास्ट ईयर. तो उन्होंने फिर आज मेरा वाइस खोल दिया. So that's so इस वजह से give me a second guys, I just have one thing to do. हाँ आपका वो उधर का जा रहा है, वो जो आपके कजन का लगा हुआ है. हाँ तो बुलनॉक्स के अंदर जाके हाँ वो क्योंकि वो ऑटो लगा हुआ है तो वहां से लिख दो. लेकिन वो इसका मतलब है कि वो ट्रेड कर सकते हैं उस अकाउंट का. हाँ करें, अभी कैंसिल ना करें, उसका देखें एक्सपायरी क्या है और वहां से आप जो है ना टेस्ट करें. Let's brought in some
organizers. उधर बैठ जाओ उस कमरे में। हाँ अब आपका लेवल हाई हो गया ना, एडवांस लेवल पे बैठो। Should be. Sorry guys, let me get started here. If I can get an audio test on the so this is live. This is live. SuperAreas.com, October 24, 2025. Let's pin this. This is good. So we should be, audio should be okay, guys. I'm broadcasting on quite a few places now. गाड़ी तुमने बड़ी अजीब सी लगाई और वहां ना लगा, इस तरफ लगा, वो बहुत शोर करती है। क्यों? क्या हो? बैटरी डाउन होगी? ओह माय गॉड। चल ठीक है, आ जाओ। तेरा रोज कोई ना कोई मसला बना, क्या बात है, बैटरी खराब होगी? ओह माय गॉड। चल ठीक है, ओके। No. Yes, audio is good. That's good. Thank you, G. So we have one 9.5 and another beat, अभी देख रहा हूँ मैं अभी बस। The last manufacturing PMI. Just each morning I gotta sit. थोड़ा सा मतलब बैंड तो दो जी। वहाँ पे दो, वेट करो, अभी बताता हूँ जी, अभी बताता हूँ क्या चेक करना है। All right. Good morning, everybody. 1 more second. Sorry, let me open up my couple of things here. What's my margin like? Internet margin 99%. Okay. Ninja NQ daily areas, Monday to Friday, Friday areas, NQ. All right. So let's get started. Oh, forgot one thing. If I need to see Dow and Russell and gold, I need this machine. I know Daniel doesn't have a brief this morning.
तो क्लास में बैठ गया हाँ मैं जाने तो जाऊँ Ewan तो मैं हाँ वो आया जैसे दिखने लगा ठीक हो Okay, guys, let me take some notes. Let's get my book going. Oh, what am I gonna do today? Let me see. Let's write up a note for 23rd of October. So Friday is 24 October 2025. All right, 24/10/2025, Friday. All right, good morning, everybody. Friday, October 24, 2025, 9:15 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good night, wherever you guys are. Thank you for coming in person as well as online. Thank you at SuperAreas.com coming in. I'm one of the 8 mentors here at SuperAreas.com. My name is Rafay, and I'll be with you for the next 3 hours, 2 hour and 45 minutes to be exact, and I'll do a bit of a analysis on these markets. We are live today everywhere, 5 or so places. Anyway, important day was anything I say is not financial advice. It's not to be used for any buy and sell offers. It's just for informational, educational, entertainment purposes only. So Friday, October 2024, Friday, October 24, 2025. What do we have on news? Inflation went down, CPI. So 8:30, there was a blast. And what is important is we have 2 new highs. So let me change that number. We have NASDAQ high and we have ESI. So 25,523 has become our so let's put this number as $25,523 as our all-time high, and 6820, I believe, became actually 6837. My God. 6837 has become. Gold is still at 94. Gold hasn't done anything at all. So, so 2 new records are made today after the news of CPI, and 25,500. We are finally seeing it. Crazy, eh? Short. मेरे अकाउंट भी वापस आ गए, वाइज भी वापस आ गया, सब कुछ वापस आ गया, which is good. Have new high all the time, records high, right? So these are the 2 records on 2024. NQ has made 25,523 and ES made 6837. So that's our night highs and lows. Let's take a look at what is going to happen. Of course, you have some news coming at somewhere around we do have some news at 9:45. So be ready. And then 10 o'clock, University of Michigan consumer sentiment and inflation expectation. So year over year went up from previous. However, month over month and core CPI month over month went down. Inflation, and Mr. Trump starts to take a credit that, hey, look, tariffs are causing all this stock market kind of pump and dump. Anyway, it doesn't matter which way market goes up. We are day traders. We'll take a look at how. So let me start writing some numbers and then I'll start analyzing which way and how and what to do. So trade, where's the price right now? 68.17. So R2 is done, which is if you look at yesterday's areas, let me double check yesterday's areas of Thursday and Friday. So it's important. So yesterday we had a number expected high somewhere around 4 to 480, and then which got so R2 is done for today. R2 is done. Market shot up and came down from 520 our zone. So our computer gave an expectation
So what time did the areas get posted? Let me double check what time. So areas were posted at exactly 8:29. Your areas were posted, and 8:30 and 8:29. We kind of knew how far it could go if it was jumped. So 200 points, 530. So I personally shorted exactly 3 minutes in my pro accounts when I hit market because it was pulling back somewhere around, I believe, on Take Profit Pro accounts. Let me double check, log in, and yeah, I shorted what price? Uh, 484. So it was as it was pulling down, actually 488. So made a few dollars coming down and so on and so forth, right? So I'm now waiting for the price to go. Where do I want? I want the price to go to 600. So my next target is 600. So let me double check 600. So I know it's not as so 25,600 because that will put us above the pivot of R2 pivot of Ninja. So NQ, let's start writing some numbers. Pivot point for NASDAQ is 25,200. My second short of the day would be somewhere around 25,595. Let's pick that number. 25,595. Right now it's pulling back slightly. So 25,595 is the number I'm planning to short from. Long pivot should be good. From here on, pivot should work. S1 should give us good support. So 25,595 is the plan for ES. Oh man, gold कितना पीछे रह गया? ES, give me 1 second for it. Expected high. It's too high. It's too high. It should give us a bit of a retrace from. So I think ES is kind of done. So 68. I'll pull up the ES numbers after somewhere looking at the order book. So yeah, you can like the take profit rule is that sorry. Take profit rule is 1 minute before, 1 minute after, 1 minute during. You can't have a trade, so you have to make sure that you do it in the not in the news. Sorry. So gold is at pivot right now. So gold pivot is 41.31. So GC, your pivot is 41.31, and ES, your pivot is, let me pick up 67.66. PP 67.66. So I am planning to personally sell somewhere around NASDAQ 25,595. And where am I picking up this number from? I'm picking up from 240 upper band, 240 upper band, and that's your ninja pivot of R2, R2 ninja pivot. So this is where I'm planning to sell it from. Let's see if it gives a bit of a retrace from here. Market already went from 300 all the way to 530. So let's see if there's a retrace available in the system. What else? GC, gold. Still, I'm waiting for 4,200 since yesterday. 41. I know today's areas are somewhere 42.
42, 40. Yeah, still 4,200. My stance 4,200 to sell and get a few points. And ES next becomes ES. For ES, I'll give the mics to. Sorry, keep forgetting Daily. I'll have Mr. Majid do a bit of an analysis on ES. So, लो सर वो कर लो कैमरा ऑन थोड़ी देर तक चलेगा हाँ जी आप लाइव हैं All right, good morning, everyone. So for ES, what I see here so far is base and pressure is up right now. Night session high is at 68.37 area. More chances are like if I have to sell ES, it'll be from this area, from night session high, which is 68.37. We have news at 9:45. And I would say that stay away from, wait till 9:45 and then we'll decide. What do you think? हाँ जी सर हाई Because इम्पैक्ट it's a न्यूज़ है high impact news and तो थोड़ा सा वेट ही कर लें तो बेहतर है You can trade this news, by the way, on Pro. It's only the CPI that was a little difficult. NQ numbers दे रहा हूँ जी आपको 25,595. I'm waiting for that. So yes. And selling में तो buying में बाद में आएंगे अभी जरा. Yeah. इसको देखें कि. Just wait for 9:45 for now. $67.89. If somebody took R2 after the 1 minute, you're done. Honest to God, you're done. If you shorted. So an update on my take profit is I do copier, as everybody knows. And this morning I woke up to two good news. Number one, my take profit accounts got reinstated because, and I said, man, I was in a trade for 30 seconds. True, yeah. I did a copier, I did a reverse, and then it went too long and too short, right? So two got reversed, two did not. So hey, it's not my fault. So they investigated. After 24 hours, they reinstated my account. So that's a good news. Second, for the last month and a half, I've been struggling to fight with Wise because the amount of transaction that happened in the last few years on my Wise with funded account, they kind of flagged my account and they said, hey, what are you doing? Why are you doing blah, blah? And I said, look, because you have to understand how banking system works is if you work for somebody, you get a paycheck. Maybe you have 2 or 3 jobs, whatever. And you generally get a check or money once or twice a month in your system, right? With Purdia, Take Profit, Apex, so at least Purdia and Take Profit and a couple other companies that pay you daily. Even if you're trading a live account, you're not gonna pull out an account money every day. But with Purdia and with Take Profit and Trade Day, you're allowed to pull money out every single day, and that's what I kept doing. And then $500 came in, $200. So over a period of time, they blocked my account, and then they said, "Hey, report your taxes," so on. So I uploaded all my tax documents. I uploaded my company documents, and finally, after 45 days of reviews, my account was reinstated, and they asked me to just manage the transactions slightly different. So if you're doing a lot of volume, just make sure on Vice, be ready to report your taxes. So under the regulations, so that's a good news. And so second thing was my pro accounts got reinstated. So
That's another. So now even on take profit, I'm not trying to take $500 daily, which you have all the videos that I was doing. Now I will, let's say, let it build to maybe 4 times a week, month I will try to take. All right, bit of a volatility right now, 9:30, market is open, first mid band, and game start ho gayi hai, play. You know how umpire says play. So pehli batting, pehli ball aa gayi. Yeah. So price is hitting R1 now. Play. Interesting enough, play. So, but remember, you are looking at 9:45 some news. So if you're short, you're done. So it's coming and testing R1 right now. What a beautiful retrace from. So price on ES is touching R1. It's doing an SRES. So finally, some news activity, you can say, after a long time. So 25, 5, 23, 25. What's the low for the night? 276. I know Trump is going to take all the credit. $247 move. So it's testing 540 right now. 25,000. How come my brightness kind of went on? Yes, you can trade, take profit at 9:30. What's my plan for today? My plan for today is NASDAQ 25, 595, 240 upper band, Ninja pivot R2. Gold, my plan is 4,200. Yes, I don't even have a plan right now. Because maybe, yes, I'll go 68.50. And next up. Yes, का क्या plan बनाए? Yes, again, maybe 68 expected कहाँ से जा रही है जी? Expected high 68.50 should be okay. Let me see a dollar gap. Yes, अभी नहीं कर रहा. Yes, का पहले figure out हो जाऊँ. 190 divided by 41. So gap is good today. Right now, the gap between ES and that is $4. So it made R1 as its base and it shot up. So now it's going back up to test maybe again 523. Let's see. So it's going from R1 from open back to. हाँ जी सिग्नल मिलेगा जी आपको 15 मार्केट इतने कुछ मिलेगा आप you'll be tired of winning like Trump. I don't know how much traction there is for seminar tomorrow. If I don't have enough people showing up, I may not do a seminar tomorrow. Just saying clearly. So I'm not sure about seminar tomorrow. $25,595. We're back up to very close to.
खाली सब्सक्रिप्शन में सिग्नल नहीं मिलते हैं, और बहुत चीजें मिल जाती हैं जी आपको. So we're back up to 500 zone again. So maybe two. Volatility is amazing. It's just gets you in and out of trade much faster. So that's the plan. We're back into R2 for ES, just remember. And same thing for NASDAQ, R2. Officially, we are testing R2 again. If you like, you can take अपना order रखें और sell करें और buy रहें जी, इसमें क्या मसला है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिधर मर्जी से सेल करें, लेकिन इट्स कमिंग फ्रॉम R1 बट इट्स ऑलरेडी डन. वो देखिए आई 510 को एक दफा टच किया. So, but remember, 10 minutes from now, there is going to be more volatility. So be prepared, be ready, because we have this crazy news at 9:45 of flash. Thursday, 9:45, you got flash services and manufacturing coming in. Yes, you can subscribe month to month. There's no, you get a bit of discount if you go multi-months, but and it's not just a software or just a signal, it's a mix of everything. So, all right, we're back to 499. Market is up again, 27. The base was up, pressure is up, market went up, tested R2 right now again. NASDAQ wants to test 525 one more time. Let's see, 516. It also includes the software, correct. Let's see if it makes a new record high of 37 is the new record. I may have to change the board again for ES. ES record is 37.25. NASDAQ is almost close to 527. We have a new record for NASDAQ. $529. So it's the upper range of R2 tested. So missed it by a tick. 5 points done. 6 points done. Almost 10 points are done from 2023. Yes, so far 6 points, but let's see if it wants to break 525. Literally from 30, you're done 10 points from the upper range. Let's see. Technically, you're done. So 530 upper range is done too. NASDAQ, if you took it, you took it. No risk, no reward. But it tested the 530 over our R2 upper range, and that is done. Now it's going back to see if it can break 530. Because my number is again 594. I'll start to get ready. See, it's having hard time breaking 5. So we have a new record of 530. I'm gonna cross this and write down 25,500. I'll do the ES still hasn't broken 37, which is the night high.
6 minutes to go to news. Just saying. It could change the wind. Train आ रही है तो track से हट जाएं. R2 somebody done. Yeah, 25,595 is what I'm waiting for. जिन्होंने कुछ लिया है वो डन हो गया जी. मुझे अलर्ट्स आने शुरू हो गए. R2 upper 10 points done. हाँ जी, congratulations. So it's stuck inside R2 at the moment, trying to decide which way to go. $30 points मिले हैं R2 से. डन जी. जतन भाई डन. बैग पैक करो, ऑफिस आ जाओ. 25 पॉइंट डन हो गए जी. और की चाहिए. 25 पॉइंट फ्राइडे वाले दिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਚ. ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ. So these guys who know already have an area, whatever, they're done. Good. So if you're waiting for I just don't take an area again. R2 was done. It came in, tested again. I know some are done, some are not. It's okay. If you're not done, you're not done. You didn't take the risk. It's fine. I'm sitting on a borderline too, trying to see what happens at 9:45. In about 4 minutes, it could rocket to maybe 600. Who knows? So just wait. No need to rush anything. It could go down to 500. I have no idea. I mean, it can go down to. I think it should go down to test 420 somewhat. But let's see. So in about 3 minutes, we have any free trial है जी. Yes, areas का नहीं है, आपका उसका नहीं है. There is free trial, but we give you software and training videos. Like ES is inside R2. If you took ES R2, you're done too, by the way. Second attempt as well. Both ES and NASDAQ R2 is done. Second attempt. Depending on your account, 1 micro is not going to kill you. Just saying. Yeah, 5 micros could kill you, but not 1. So SRES is building. 30-20 mid-band worked. It's trying to test it again because NASDAQ wants to go up. Everything stock market. All manipulated. One day 24,150, next day 25,500. This is where I said don't risk. SRES is building on 1510. Signals work in the CFD or futures is ahead of everything. If you can learn to do futures, you can just apply the signals on the CFDs as well. लो जी, done हो गया जी. So 9:43, 2 minutes till the next volatility. Got stuck between. Can you reach for me trial first? You just go on SuperAreas.com and just follow the instructions. It's all there for you. How much it?
All right, this news you guys can trade. Just remember. Let's see. Flash PMI is about to embark on us. Ho, 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 ho. Look at the volatility. Incredible. It shot to 550 and came down. So we have a new high of, yes, and we have a new high for 550 became a highest high. And still flash PMI is green. Both are green. So I think more chances it will push up. More chances it will push up. Let's see. So jumped to 550 and then came down. Let's see. Yeah, 595 is still good. It should still give us some number because that's the upper band of R2 of Ninja Pivot. Should give us some dollars, but let's see. No. The markets are all-time high. Again, $55 on ES. Isn't this crazy? Amazing. पागलों की तरह मार्केट ऊपर जा रही है. हर बंदा कह रहा है बस स्टॉक मार्केट में पैसे डाल दो. पता नहीं है आगे होना क्या है. अपने नाइट सेशन हाई की तरफ जा रही है. I lost on TikTok, so because I think it didn't get charged whole night. NASDAQ में थल्ले लाओ जी. नहीं, NASDAQ को नीचे लेकर लेके आएंगे फिक्र ना कर और जिक्र ना कर. आएगी 10 है 10 माइक्रोस. हाँ ठीक है. My TikTok battery just died, so that's. लगाया चार्ज? नहीं वो अभी लगा दिए. Guys, your जाओ जी यहाँ से चले जाओ 400 पे चले जाओ. Let's see. नहीं 300 पे लाओ. 300 पे आ जाएगी. $30.20 is in a bit of a divergence. अनस भाई की फूक लगवाएं. अनस भाई पता नहीं क्या करी जा रहे हैं. तो जाएंगे टेक प्रॉफिट पे. हाँ अब आप जाएं. ये वाला करते हैं. ठीक है. ये वाला ठीक. ये वाइज वाली डालें आपकी. जो वाइस का कार्ड है ना, ये वाला.
मेरे पास है फिजिकल कार्ड वो डालते. Pull back a little, not crazy. Still, मैं तो लॉन्ग नहीं जा रहा जी. 420 से 420 का नंबर वैसे ही डेंजरस है. तो you can, but I'm not. I'm not a long person at all. I'm just saying. So I'm not a long guy at all. So it pulled up because it could stop further around. Pull back कर लो थोड़ा सा. 100 पॉइंट और गिरा दो यहाँ से. So high to go low was the consensus. So 550 so far, the highest. News is done. If you're done your trade, you're done. If from R2, you're done. And अनंत भाई भी 300 से शॉर्ट है. वो उनसे अब करवा लें. अगर वो उठा के अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. All right, pulling back up. Let's see. ना उठाए तो उनको मैसेज कर दीजिए. We're back to 480, waiting for the price to 473. Isn't this amazing? Trying divergence trade on 3020. It should come in because it's outside of the 60-minute band. So it should come inside. It should test R1 as a support for ES. I want this price to come to 328 or 231. That would be a good support. So your S1, your pivot, that should act like a good support. मैंने मैसेज करती हूँ उन्हें. अच्छा. Come on, NASDAQ, what do you want to do? Eventually she's going to go down, right? 25,000 flight. हाँ आनी चाहिए लेकिन शायद एक दिन में ना आए ना. वो आप छोड़ दें. No problem. एनएस भाई अभी एक प्रॉफिट लिया है. पता नहीं हम उनको एमईएस करवाते हैं वो फौरन घुस जाते हैं मिनक्यू में. पता नहीं क्यों. तो उनको एमईएस में मजा ही नहीं आता. आजा भैया आजा. ऑल द वे डाउन टू आजा. 300 पे आ तो रही है. पहाड़ी से उतर तो रही है. नखरी नहीं है. नैस्डैक गर्लफ्रेंड की तरह है और एमईएस वाइफ की तरह है ना. लोगों को गर्लफ्रेंड पसंद होती है. नखरे नहीं खत्म हो गए. आ गया. की करना है जी. की करना है. दोस्तों की करना. अस्सलाम वालेकुम. सेल कर दे जी 10 के साथ हुआ और कुछ और बता. हाँ
नहीं आप एफटी में बात करो एफटी ओके आज yes Done. हाँ I know everybody is done, every whole world is done. आपने कहाँ से ट्रेड लिया? मैंने window by represent. अच्छा, माजिद भाई को कॉपी करना शुरू कर दी। ग्रेट। No, because base up, pressure up. तो जाना ही था, प्लस अपना नाइट सेशन हाई टेस्ट करने जाना था। यस यस, नहीं नहीं ठीक है। ओह ये तभी सेल करवा था 2020 ले लो। ये आप अपने कमरे में लगा लें कोर्ट के लिए। I don't have a door. You have a door. I know. Okay. चलें। All right. Sorry. हाँ हाँ कभी कभी तो गलती हुई तो बंद कर आप भूल Just prepping. हाँ बंद जब आप $1000 का प्रॉफिट लेके बंद कर देंगे ये 10 के लॉट के साथ 100 पॉइंट मूव वही तो $1000 बन जाएगा ना। नहीं उन्होंने दो दफा लगा दी थी फिर मैंने एक करना के एकदम से अभी कर दी दो साल लगा अच्छा चलो ठीक हो गया ऑन है ना वो फिर चलेगी जो ऊपर चलो बस ठीक है अपना आराम से काम 500 को टेस्ट कर रही है बार बार। चार बजे वाइज मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि एटलीस्ट एवरी 2 वीक्स के बाद पे आउट देंगे। टेक प्रॉफिट में आपके वॉलेट में पड़े रहते हैं तो 2 हफ्ते बाद निकाल लेना। डेली के निकालेंगे तो वो फिर टिकटॉक लाइव नहीं बढ़ जी मेरी बैटरी बंद हो गई जी सॉरी। तो मैं अब टेलीग्राम है जूम है और बहुत चीजें तो फिर टेस्ट करने गई है 500 को 508 510 11 अनस भाई को सही टाइम पे सेलिंग कराई ठीक मिल जाएंगे उनको कुछ। ओए होए 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 जबरदस्त हो गया जी। ये मैंने उसके पीछे जरा कोट हैंडल लगा दिए वो उसके पीछे कि कभी विंटर आना है ना। हाँ So you're gonna start. I was short from R2. I don't know how to. I'm not sure how your copier is working. I can't help with the copier like this, honestly. और गिर जा भाई ऑल द वे नीचे आ जा 400 पे आ जा। हाँ हाँ तो सुखमन के साथ अरेंज करवा दें ताकि वहां जाके उनको जहाँ पर अब लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिर मुर्ताज को बड़ा रूम दे दें क्योंकि अभी इनका ऑडियंस नहीं है ना तो मुर्ताज को हम दे देंगे तो ये चली जाए उधर बिगिनर्स के लिए। हाँ मंडे को Arneet is off for 1 week so we will have another alternative. It's another mid band to go green to go up. Back into R1.
Gee, I'm trying to see if there is enough interest for seminar tomorrow. If not, then I may not do it because back to back, then it's a little bit difficult. All right, bit of a volatility more. 507 पे गई जी एकदम 497. Sorry, 10 o'clock candle, some volatility. Let's see. Next candle is green for 1 hour, for 30 minutes. It's gone to 520. ES gone to R2 back again. NASDAQ now wants, this time around, maybe it will break 5. Let's see. $25,500, unbelievable. Another new territory of price. भाई साहब मैं ले चुका हूँ R2 भी पहली अटेम्प्ट में ले ली थी मैंने उसके बाद 530 भी 2 दफा टच हो गई है तो भाई आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग बिफोर 594 थोड़ा सा ऊपर पुश हो जाए ताकि वहां से कुछ रेजिस्टेंस बन रही है 240 से बाहर आ जाएगी तो थोड़ा सा मैं रिस्क नहीं ले रहा अभी क्योंकि मैंने पहली अटेम्प्ट में लिया फिर दूसरी पे लिया अब मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ अगर 550 तोड़ेगी तो कुछ देखता हूँ अभी तक तो वो वहीं पर फंसी हुई है Why volatile? It's Trump is online saying he is the reason stock market is up. तो आप क्या करेंगे ट्रम्प के मुकाबले पे आप क्या कर पाएंगे कुछ भी नहीं वो कह रहा है तो वॉलेटिलिटी तो रहेगी जी another 10 o'clock कोई न्यूज़ फिर आई है जी रिवाइज कंज्यूमर सेंटिमेंट आई है 10 o'clock so since that is down so expectation was the same but now that's a red news so that's pulling up and down तो क्या कर लेंगे so that's not a good news so it's So another mid-band worked on ES. Look, trend तेज है. Green to buy, red to sell करी जा रहे हैं. Just not. The ES wants to maybe test night session high of 37. Let's see. Both trying to get synced. Volatility is just amazing.
Another mid band worked after. आती है mid band test करती है. So we had news at 8:30, we had news at 9:45, news at 10 o'clock. So let's see. Yes, very close. Yeah, even after divergence, it's fine. So either divergence will fail or mid-band will fail. One of two things. You can't have both ways. So either that trade or that trade, other trade. 550. चार दिन पहले ये 24,000 जो है ना कहाँ खड़ी थी 150 पे. $550. Trump says he's ending all trade negotiations with All Canada. trade negotiation. Oh man, I don't. साढ़े पीछे पै गया. Bloody customer पागल इंसान. No, जी almost तोड़ दिया उसने. R1 officially. Look at the candles green after green. 35. So ES का वेट कर रहा हूँ 50 का 6850. Newer high. NASDAQ किसी की नहीं हुई जी. This. NASDAQ can rip any, even micros apart. Matter of a second. So what is up today? Let me double check. Trading. So you have Tesla, Meta is up, Google is up, Nvidia is up, Microsoft is up, Apple is up, Tesla is the one only down. Broadcom is up, so $550 को नहीं तोड़ा उसने भी. It's still in process though. Don't know हो गए? Yeah. No, it's still in process. Okay. Usually it take that long or? Yeah, generally refresh करें तो हो जाते हैं right away. Yeah, it's done. Third candle rejection is building, came down to mid band,
created a bit of a gap trade. See, every time price goes to this level, people are scared to buy. So it is all-time high. It's broken all records. We had a 394. Now we have a new record of $550. 25,550 became a record, and 68.37 became the record. And gold already has 43.94 is a record. So let's see. What is that? So now we have a new high. $530 पे खड़ी है. इसमें ट्रेडर वेट मुझे शो नहीं कर रहा. हाँ. डिस्कनेक्ट करके देखो. डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट. रिदमिक है, निंजा ट्रेडर है, वो नहीं है. ये रिदमिक में नहीं, रिदमिक में नहीं. नहीं मैं कह रहा हूँ वो नहीं आ रहा, ट्रेडर वेट का नहीं. अच्छा, मुझे एनी डेस्क देंगे आप? दो कर लिए ना आपने, दो लिए ना. कहाँ एक और कर. हाँ हाँ, एक और बाय. Alright, 537, 538. Come on, go to 594, man. Please, खत्म करो. Can I give you my Adidas? Yes, please. $1803. 1803. 612. And accept कर लेंगे. ES is stuck on this candle. Doesn't know what to do. Should I go up? Should I go down? So, and the trader.
कॉपी रुक गई है 530 जोन में। ये ले सर, डन। ठीक मैं आपका कॉपियर रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है ये भाई। वाला, क्योंकि आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है। अभी ऑन ऑफ ही है, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। वो जो दूसरा वाला हाँ, वो भी जाके अब आप बाई करेंगे ना तो वो कनेक्ट हो जाएगा। एक और बाई करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पे जाना, क्रिएट न्यू पे? क्रिएट न्यू पे। उत्तरा पहाड़ी से रिट्रेस दे दे। So complete. Will I buy at 24th? No, I will buy it if I think to buy. It's Friday. I don't want to be stuck, so I will see. Maybe. आपको नंबर, मैं पिवट का वेट कर रहा हूँ जी। 25,200। सर testing another mid band after another mid band going up on ES. Green to buy, red to sell जी। That's it. उसमें क्या कमाल है, स्कैल्प करी जाए along the way। थोड़े अरसे बाद न्यूज आई है गवर्नमेंट शटडाउन के बाद। I will not buy at 420. If I have to buy, I'll wait for S1. बॉडी से उतरनी चाहिए उसको।
वहीं घूमी जा रही है 5:30 पे, so let's wait. No, the volatility. Ooh. पाँच सौ तक भी नहीं आ रही आप. फिर 520. What's a divergence trade? Divergence is you wait for the price and strength and you keep an eye, but it's a difficult trade to enter. So, and the stop loss is big, so not recommended. प्राइस को S1 पे आ जाए. हॉट से डरना जी. R2 को रिस्पेक्ट कर गए. R2 को तीसरी दफा उसने रिस्पेक्ट किया. Yes, फिर चलेगी. Back to 60. 30-20 is tested. यहाँ SRES बन जाए ना हमें 30-20 पे एक ब्लैक कैंडल टू द पहले एक ब्लैक कैंडल ऊपर और नीचे की बनी, then we are back to business. Thank you जी. No problem. टेस्ट करें स्लोली स्लोली. माइक्रो 1 2 दो माइक्रो सही रहते हैं, बहुत रहते हैं. इवन एक माइक्रो से हो जाता है कम. 25,000 में, because the target is only
It needs to break 463. It needs to break 463. Start again. $500 को बेस में बना ऑलवेज 500 से आके फिर वापस टच हो रही है। अनिस भाई ने कहाँ से शॉर्ट किया हुआ है कुछ पता है? 510 15 से या 400 500 के एरिया 500 के लिए okay. I turned off TikTok live, but not personally. It's just my battery is dead for this phone. It's not charging. Let me see if this charges. This cable is bad. बस 500 को टच की और वापस ले गए जी ऊपर 512 13 11 10 Let me send results to those who want to see results. Just give me a second, guys. Results. और कहता है results पे जी सब मेरे रिजल्ट रह गए हैं जी दुनिया में देखने वाले
हेलो जी, मेरे रिजल्ट देख लो जी लाइव. Here I am. What am I doing? Where I am. सुबह एक माइक्रो शॉर्ट किया हुआ है अपने. So, ठीक है जी, मेरे रिजल्ट्स. खुश हैं जी मेरे रिजल्टों से. रिजल्ट्स देख लो जी, मेरे रिजल्टां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ नजर ला ਦਿਓ. मुझे ना यहाँ पर वो लानी चाहिए मिर्चें, है ना? फूक फूक के करेंगे और फिर फूकेंगे अपने अकाउंटों के ऊपर के यार. शब वो गिरनी है यहाँ से और क्या होना है. 500 का इवन नंबर था, मैंने ट्रेड लगाया हुआ 80 पे मैं निकल आया हूँ. डन हो गया हूँ ट्रेड. 20-20 पॉइंट का मैं ले ही जा रहा हूँ यार माइक्रो से. पर्डिया स्टिल वेट कर रहे हैं जी, पर्डिया का वेट कर रहे हैं. पर्डिया अब फिर चलेगी 22 पे. फिर एक और मिड बैंड आया. We need this at pivot. That would be good. Because everybody who has sold it, who has bought it, remember, needs to take some profits. पहला मिड बैंड रिवर्सल डाउन की तरफ चल पड़ा है. आ जाओ जी. मुझे चाहिए ये प्राइस 200 पे. फिर ये चलो 200 पे ना भी आए, 300 पे तो आए. थोड़ा सा रिवर्सल तो दे, क्योंकि ट्रम्प का कोई पता नहीं. संडे को कोई ट्वीट कर दे तो हर बंदा कहता भाई फ्राइडे को दुकान बंद बुंद के करके जाओ. तो यहाँ स्मोक अलार्म का मसला ना होता, मैं मिर्चें ले भी जाता. इधर नहीं है. हाँ, स्मोक अलार्म होगा यार, क्योंकि वरना तो फायर I अलार्म. haven't seen, maybe in kitchen. Yeah. I don't see here. Unless roof के pro. यहाँ से 100 पॉइंट जाएगी तो मैं शॉर्ट करूंगा. नीचे आएगी एटलीस्ट. गिव मी अ सेकंड. अगर कोई और एमएनक्यू के रास्ते में पिवट तो बहुत नीचे है. मे बी नाइट सेश, ये जो नाइट हाई है जो 320 300 तक तो इसको गिरना चाहिए जी. अभी 240 के 60 के अंदर तो वापस आए. मजाक नहीं कर रहा. उतर ही नहीं, पहाड़ी से नहीं उतर रही. क्या करें. फिर 500 पे चली गई. इस दफा लिक्विडिटी क्रिएट करके शायद ये जा सकती है ऊपर, क्योंकि इसने इस दफा स्विंग कितनी बड़ी ली है इस कैंडल के. लुक एट द डाइवर्जेंस. एमएनक्यू 30 मिनट चार्ट्स 5 डाइवर्जेंस हैं. एक ऊपर गई, दूसरी ऊपर गई, तीसरी ऊपर गई. It should come down. Price has to come down. अगर मैंने बाय भी करना है 300 से पहले कुछ नहीं, 30 मिनट के मिड बैंड पे.
$25,550 हमारा नया नंबर आ गया जी, मजा आ गया। ट्रम्प के दौर में कुछ भी पॉसिबल है। एक हफ्ते में ये प्राइस जा सकती है 500 पॉइंट ऊपर। Alright, 68.37, 25,550. Oh yes, it's just all be 25,550. Where is Dow? Where is Dow? Where is Dow? Dow is at R2 coming down. Russell is touched the expected high coming down. NASDAQ is in R2 coming down. ES is coming down. गिर रही है सर, हल्का हल्का। ये जो हल्का हल्का सरूर है ये उतर रहा है NASDAQ का। Next candle green, I mean red. हाँ, So, हाफ एन yeah. आवर वाली 30 नीचे ही जा रही है। पहला मिड बैंड भी आपका नीचे जाते हुए आ गया है, सही जा रहा है। फिर ले गए 500 पे। 500 बड़ी अच्छी पसंद आ गई है। में back into 500. पहली दफा इसने अच्छी रिट्रेस दी थी। Yeah. All the way down to 427 तक। $2, $4, $8, $900। चलो ये मार्केट तो नहीं है, गोल्ड में चले जाते हैं। गोल्ड अबव पीपी से चला गया है, लेकिन गोल्ड जरा जाए ना 4200 पे, फिर देखेंगे। गोल्ड जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पर है इस वक्त। MES में इतनी डाइवर्जेंस है 30 मिनट में। अब वाइट लाइन पे वाइट लाइन चढ़ी हुई है। MNQ but gold में भी divergence, MES में divergence just mean price should start taking the opposite direction now. ट्रम्प क्रेडिट ले गया वैसे सारी चीजों का कि जी मैंने मार्केट बढ़ाई है। $509, $511, $515, $517। दिल तो कर रहा है एक पंगा ले लूं, लेकिन कहाँ से लोगे पंगा? मैं नहीं, R2 को नहीं तोड़ रही। R2 तोड़ नहीं रही ना, तो 500 एक्सपेक्टेड हाई पे आए। चलो फिर मैं इसीलिए 594 का वेट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 240 के बैंड से तो बाहर जाए ना। क्योंकि 710 ऊपर बहुत ज्यादा है यार। 710 बहुत ज्यादा ऊपर है।
कितनी डाइवर्जेंस लगानी है 68, 20. So this is how I trade. Let me show my results. Again, लोग कहेंगे results नहीं है. Wait कर. This is how I trade again. One, two, three. एक माइक्रो से चलता रहता हूँ फिर एवरेज करता हाँ जी, रहता कैसे हैं? ठीक है, हो गया काम है? एक चीज पूछनी हाँ जी, जैसे फंडेड अकाउंट है सर, हाँ। 29 को रिन्यूअल है, तो वो 29 का दिन काउंट करते हैं क्या उससे पहले के दिन? उसी दिन ही रिन्यूअल होगा। नहीं, तो उसी दिन वो दिन भी वो हाँ, काउंट करते हैं, तो मतलब वो दिन प्लेट करने देते हैं कि उस वो दिन से खत्म, मतलब 28 तक का 28 की मिडनाइट तक जो भी करें हिसाब किताब. मुझे पता नहीं था, मुझे ऐसा था कि कैरी फॉरवर्ड होगा जो भी बना ना, नहीं है कैरी फॉरवर्ड होता है, कोई मसला नहीं. मतलब जो बन गए थे वो सारे कैरी फॉरवर्ड होते हैं. तो फिर नेक्स्ट टाइम पे कम अब ही बना हाँ, सकते। जितना आधा है, जितना बैलेंस पड़ा है नहीं सर, सिर्फ 400 ही बचे थे। नहीं 500 क्योंकि मैं पहले 2-3 दिन ऐसे थे ना, तो मैंने कहा नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने आपके अकाउंट में थ्रेशहोल्ड कितना है वो मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वर्थ इट होता है कैरी. अभी तक जो भी है वो स्टॉप लॉस से ही किया है। नहीं वो ठीक है, लेकिन अमाउंट कितनी रह गई है ये देखिए ना, अकाउंट में बैलेंस कितना है. बैलेंस है 25,000। नहीं वो नंबर नहीं, ओके, इधर वाला ड्रा डाउन कितना है आपका. वो मुझे चेक करना पड़ेगा हाँ, सर, मतलब वो टेक प्रॉफिट में जाके चेक हाँ वो जाके लिखा होता है ना. ये सामने एक डिस्टेंस टू ड्रा डाउन नजर आ रहा है. जिस तरह मेरे पास 1500 देते हैं, इस वक्त मेरे पास $1485. ओके, राइट, तो मतलब मुझे टेक प्रॉफिट में जाके देखना है. तो अगर तो 200 ड्रा डाउन रह गया तो फिर तो फायदा कोई नहीं, मीनिंग कि आप इतनी मेहनत क्यों करेंगे. ओके, तो मतलब वो थ्रेशोल्ड देखने के बाद यस, ओके सर, नो प्रॉब्लम, तो फिर मैं मंडे आपको बताता हूँ कि कितना थ्रेशोल्ड। नो प्रॉब्लम, नो. थैंक यू। ओके जी। तो फिर वो सब्सक्रिप्शन वो ऑटो रिन्यू हो जाएगी, ऑटो चार्ज होगी, सब कुछ ऑटो होगा. ऑटो उसको फिर करने की जरूरत नहीं है। नहीं ओके सर, थैंक यू। थोड़ा सा फिर तोड़ा है इसमें. हाँ नहीं इसके NASDAQ की बात कर रहे हैं. ओके जी, फिर 530 पे आ रही है, शायद जाके टेस्ट करे. लेट्स सी. यस, जी आज ये में हमने इस मंथ 30 डेज में 1500 क्लियर करने 30 डेज है जी आपके पास. 30 हमने 1000 बना लिया और हाँ, clear तो वो नहीं- कैरी ओवर हो जाता है, कैरी हो जाता तो नेक्स्ट मंथ खाली है. नेक्स्ट मंथ सिर्फ 500 बनाना है. यप, बस करने की जरूरत नहीं। जी स्ट्रेस नहीं करें यार. लो जी, नेक्स्ट कैंडल 15 मिनट वाली 5 मिनट जा रही है जी. 535 दोबारा 480 से होके फिर 535 पे आई. दे जा यार, मुझे 594 दे जा. नहीं तोड़ रही थी 500 मीनिंग के. ये वो क्लाइम भी तो इतनी चढ़ चुकी है ना. Exactly. 4 दिनों में 750 पॉइंट. और आज हैप्पी फ्राइडे, इन्होंने वही हरकत करनी है जो कि ऊपर ही क्लोज करेंगे. ऊपर क्लोज नहीं, हमारे पास टाइम तो बहुत है. हमारे पास ऑलमोस्ट कितना 6 घंटे पड़े जी. बैक टू R2 टेस्टिंग, शायद एक और डॉलर.
और जी यही कह सकते हैं। हाँ जी 560 हाँ गुड 594 9 मैंने लिखा हुआ है, पता क्यों? दिल पे छुरियां क्यों चला रहे हो? 594 560 फिर आप जहाँ मर्जी से, मैं अभी भी ट्रेड में बैठा हूँ, माइनस में $31 हूँ, क्योंकि मैं ओवरबॉट ले ही जा रहा हूँ। 30-20 का ओवरबॉट ओवरसोल्ड खेल रहा हूँ। ठीक है, ये जो मुझे 4 अकाउंट वापस दिए हैं इन्होंने, इसको भी तो अब खिलाना पिलाना है। 3 दिन से बेचारे भूखे रह गए, वो उन्होंने कुछ खाया नहीं। माइक्रोज कर रहे हैं ना? माइक्रो सर, माइक्रो मैं कसम चुकी है कि हैं 560 मुझे 560 के नंबर कहाँ से लिए, क्वेश्चन ये। Yeah, a lot of people doesn't matter, they're right, But why 590 because निंजा का पिवट है, R2 निंजा का पिवट है, 240 के बैंड से बाहर है, तो 590 पे 580 अच्छा 94 इसलिए भी क्योंकि पिछला हाई था 394, उसमें 300 ऐड कर दें तो कोई ना कोई तो हमने रीजन अपने दिमाग को सेटिस्फाई करने के लिए रखना है ना, कि मैंने क्या नंबर पे किया, क्यों किया। नहीं, मैं ओवर ट्रेड दबा के कर रहा हूँ, क्योंकि ये बेचारे 4 दिन से जेल में थे, वापस रिहा होके आए हैं, लगी होगी नाश्ता, लगा हुआ है। आज डिनर। कि मैं ट्यूसडे का उन्होंने मुझे एक भी ट्रेड नहीं दिया, वो उसके बाद तो रात सुबह मैं सो के उठा, 2 गुड न्यूज, वाइज खुल गया और कोई बात नहीं। तो अभी मुझे चाहिए ये नंबर, क्योंकि रीजन पता है क्या, 594 की, कि वही निंजा का R2, निंजा का R2 240 का अपर बैंड। अब देखिए, अभी मुझे मैसेज आया, किसी ने अभी भी 530 से फिर 10 पॉइंट निकाल लिए ओवरबॉट। हर कोई डरा हुआ है, हर कोई ऑनेस्टली डर जाते हैं ना। नहीं, क्योंकि हर कोई कहता है यार मैंने अगर यहाँ से बाय कर लिया तो इसने वापस आ जाना है। एग्जैक्टली। प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो गई ना 12 के बाद, तो क्योंकि 4 बजे 12 बजे यूरोप कैंडल क्लोज हो जानी है, 4 बजे तो, और ट्रम्प भाई का कुछ पता ही नहीं है। तो आज तो कनाडा की सर्विस से पंगा कर रहा है। हाँ, कनाडा में कहता है कि इट्स ओके। मेरा फेवरेट इंसान बनता जा रहा है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। ओनली थिंग प्रेडिक्टेबल टुडे इज इट्स अनप्रेडिक्टेबल। ये हम कह सकते हैं सुबह, मीनिंग कि यही चीज प्रेडिक्टेबल रह गई है कि सुबह उठ के उसने करना क्या है। नहीं, देख सीपीआई का डेटा आया ना, तो उन्होंने मार्केट पंप कर दी। ये देखें, डिलिबरेट, मेरी ओपिनियन ये कह रही है, लोग गोल्ड में जा रहे हैं तो वो आर्टिफिशियली स्टॉक मार्केट पंप कर रहे हैं कि नहीं जी मार्केट ठीक है, इधर आओ इधर आओ, तो वो दोनों की फाइट हो रही है, गोल्ड और स्टॉक मार्केट। पर हु केयर्स मैन, जिसके पास 100 बिलियन है वो मार्केट मूव कर रहा है। हमारे 12,000 ऑर्डर से हम हैं गोल्ड में 4200, 4200 सेलिंग। 4000 पे तो हमारा वो है ना एक्सपेक्टेड। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन 4200 में आपको कुछ मिल जाएगा। हेलो जी, आ गया $10 और आ गए। 10 करते ही बस हो जाती है। लो जी, where is my, I put it at 500, okay, 516 से ट्रेड में हूँ, इसको आना चाहिए जी। अब छोटे माइक्रोस लेते रहें। when you're stuck, only thing will keep you busy is a couple of micro trades. Remember, if you add $50 to one account, end of the day, they end up being a $250 US end of the day. $500 तक फिर तो टेस्ट करने आ, मुझे कुछ तो दे जा।
दे ही रही है good. फिर आती है फिर वापस No. done. हाँ जी good. Alright. है नहीं sorry I'll tell you later. okay no problem. हाँ जी $50 to $60 एवरी ट्रेड नहीं मैं तो $20 पे करता हूँ $20 देखें $20 क्या है 10 माइक्रो के पॉइंट्स ऑन 1 माइक्रो so then $20 here $20 there overbought हो जाए उसने 10 पॉइंट्स दे देने हैं $10 to $20 दे देगी जी आपको इतना बुरा हाल नहीं है मार्केट का NASDAQ R2 पे फंस गई तो फंस गई there you go oh look at this guy that is rocket science this is amazing उसके अंदर घूमी जा रही है सर लेकिन साथ साथ प्रॉफिट लें यार इतना आप बहुत लंबा टीपी रख रहे हैं जी TP too long go micros 2 to 3 TP 10 to 20 points sorry आ जा भाई थोड़ा सा उतरा पहाड़ी से ये तो बंद करें डन जी बहुत हो गया $262 पर अकाउंट टाइम्स 4 अकाउंट्स थोड़ा थोड़ा करते करते उतर ही रही है जतन भाई गुड जी 200 आपने भी ले लिया 530 से 20 पॉइंट डन हो गया जी 20 और 20 40 पॉइंट है फ्राइडे है डन कर दें जी 11 बजे वाली कैंडल आने वाली है अगली 7 मिनट में तो डाइवर्जेंस है इसको 302 पे जरूर आना चाहिए कब आएगी पहला स्टॉप वहां लगेगा 302 पे ब्यूटीफुल आ जा नीचे आ जा it has to break 563 the ninja pivot of then it will make some sense didn't break 563 it jumped from exactly 463 sorry it had to break and it did not break yet R1 के pivot से ही भाग गई ऊपर वापस if it breaks R1 of ninja pivot then it will start to come inside
Break? No. Guys, I may run it a little bit short today. Honestly, it's 10:55, so I may run it slightly short today. Four more minutes, 59 points. Gee, congratulations. Very good. Awesome. Rock star. हाँ जी, चेक करें एफटीएमओ। यार 300 प्लस हो रहा है, मैं ले लूं? ठीक है, ले लें, ठीक है। एक मिनट जरा, चलो 270 में ले लिया। ठीक है, चलें। ओके, मैं आपको अगला नंबर दूंगा, आ जाए। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके जी, ठीक है जी, ओके जी। I had him short at 377, so he took 30 points. So if it goes back in now. मैंने एनएस भाई का क्लोज करवा दिया क्योंकि ऑलमोस्ट उन्होंने 30 पॉइंट ले लिए थे। अच्छा मैंने कहा 30 पॉइंट तो अब ले लेना, तो $300 तो ले लिया। वेरी गुड जी, हो गया ना? हाँ, तो अब वो दोबारा अगर उन्होंने 5,000 का टारगेट है, ये 300 लेते रहे ना, तो ये उनके लिए आसान है, गाड़ी खोल के पार्क करके तो करते रहेंगे। ठीक, तो 30 पॉइंट 10 लॉट, दैट वर्क आउट टू जी 440 पूरे से गई है हमारे एरिया से। रॉक स्टार। अब इसको आके तोड़े और हैमर करे और जाए जी। $270 जी अनस भाई ने निकाले हैं, जवाब आ गया। उस दिन गोल्ड में बचत हो ही गई उनकी। ये 23 ऊपर चली गई। Yes, has gone back to test. मैंने तो 2 माइक्रो पे रखा हुआ है, वेट कर रहा हूँ बस। एक दफा 420 नंबर टूट जाए ना, तो फिर ये फ्री फॉल में आ सकती है। सीपीआई ने उसको पुश किया 530 पे, फ्लैश ने उसको पुश किया 550 पे। तो You want some tea? the tea is okay, भाईजान। Thank you.
All right, guys, 11 o'clock candle, and today I'm gonna leave slightly early. एक्सक्यूज मी, जी सर। ये ना मैंने जो पेमेंट की है इसमें HST नजर नहीं आ रहा। नहीं, इसमें HST नहीं है। मैं आपको रसीद आपको मैनुअल भेजूंगा, इसमें HST इंक्लूड होता है। वो 900 वाला भी हाँ भेज देना। हाँ, वो दोनों 900 900 वाली तो आप उसके अंदर लॉग इन करके देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ ना कहाँ पर है, एक मिनट। ठीक है, अभी आप खोलें सुपर एरियाज तो मैं दिखाता हूँ, उसमें लॉग इन करें। हेलो सुपर जी, वालेकुम सलाम। ठीक है, दुआवा जी सर। हाँ जी, सही कई बार ही ਹੁੰਦਾ है मेरे नाल। मसलन कल परसों मैं एक रिवर्स बटन दबाया, 2 लॉन्ग रह गए, 2 शॉर्ट रह गए, तो फिर राइट में मैं 30 सेकंड तो बाद पोजीशन क्लोज की थी। हो जाता है तो मैं कई बार देखिया वो इन्नी तेजी ना वो कई दफा वॉलेटिलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ करता है, तो नॉर्मल है जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ हाँ, ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਟੈਬ ਭਾਵੇਂ 2 ਖੋਲ ਲਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਡਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਵ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈਜਿੰਗ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਜਾਂ ਇੱਕ FTMO ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਨਾ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ 10 ਉੱਤੇ ਗਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਆਈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪਾਈਕ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਲੋਲੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਗਰ 500 ਤੋਂ 250 ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ 250 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, तो ये नॉट अलाउड। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। नहीं वो अंडरस्टैंड है, लेकिन इवेंचुअली ये सारी फंडेड कंपनियों ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਜ, ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕਾਪੀਅਰ ਤੋਂ ਹੈਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 100% ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸੇਮ डायरेक्शन ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ डायरेक्शन ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ 골ਡ ਲੌਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਈਐਸ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੋ। ਇਹਨੂੰ ਹੈਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੈਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਈਚ ਅਦਰ। ਯੈਸ, ਨਹੀਂ ਹੈਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਐਸੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੇ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਸਲੋ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਓ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਟ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਮੀਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੋ ਦੀ ਫੀਸ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਐਨੀ ਡੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਦਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। हाँ जी कर सकते हो जी, कर सकते हो। हाँ जी बिल्कुल। नहीं जी नहीं कर सकते। नहीं है, ਅਸੀਂ FTMO ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਟਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਟਨ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਕਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। नो प्रॉब्लम सर, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਫੰਡਡ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਜ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨੇ। नो प्रॉब्लम, ठीक है सर, ओके जी, थैंक यू जी। हाँ जी, मैंने मंडे ट्यूसडे कर लो, मैं देख लूँगा, नो प्रॉब्लम। नहीं उस अकाउंट ਨੂੰ ट्रेड नहीं कर ਸਕੋਗੇ, ਉਹ डिसेबल ਆਟੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। नो बिल्कुल जी बिल्कुल, नो नहीं हो जाए सर, अज्जे 100 ना करो, थोड़े 4 दिन बाद कर लेना। नहीं मैं यूं कह रही है ना कि अज्जे ही भावे ना फिनिश करो, मंडे कर लेना, मंडे ट्यूसडे कर लेना। ठीक है, वेरी गुड। नो हाँ हो जाएगा, बस फिर आहिस्ता आहिस्ता पंजो हो जाए, रोज तो $50 कटो, $250 शामी कर आ जाएगा। हाँ तो बंद कर दो, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1000 ਨਿਕਲ ਸਕੇ। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर, सी नो प्रॉब्लम।
ठीक है सर, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके, Massive sanctions. है जी। Russia. ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? All right, guys, 11:10 today. I gotta go early, so I will see you guys later. Enjoy. See you on Monday. Numbers to leave. To be honest, it's Friday. We'll wait till Sunday areas and go from there. I still think 25,594 is a good buy, good sell, and 25,302, if happens to be today, should be okay. 25,003. So that's a 30-minute mid-band green. What else? Gold is still standing at 4,200. ES is 67.60. Even 50 is okay. 67.50. As I keep repeating numbers wrong. They're changing too fast. 68.50. If it goes there, we should have some good resistance there. All right. So really what worked for today was R2, somewhere around there. Users made some. Enjoy, G. Take care. I will see you guys on Monday at 9 o'clock. Take care.